Thank you, sir. I now invite Dr. K Mandal for a session on happy while facing challenges. Dr. K Mandal is a distinguished visiting professor at Indian Institute of Technology, Kharagpur, and adjunct professor at National Institute of Advanced Studies and at Allahabad University. Dr. Mandal specializes in the areas of neuropsychology, cognitive sciences. So, with a huge round of applause, may I request Dr. Mandal to take up the session? Thank you so much. Thank you so much, and very good morning and namaskar to all of you. So, just my major concern has not been anything else but my voice, whether I'm reaching you or not. Just someone has to raise hand and tell me that yes, you are getting me. Uh, am I audible to all of you? Okay. If I'm not audible, since I'll be switching to the slide mode, I may not be able to see everybody, but my request to someone from you to let me know if there is some disturbances or interruptions in between. Well, thank you so much. I'm thankfully acknowledging the invitation from, of course, I got it from my Dadabhai, Dr. Chetri, and of course, I'm indebted to Shiv University for giving me this chance to talk to our students, the new generation. Well, what I'm doing, I'm no guru. First of all, I just wanted to submit before you, though it is a guru series, but let us start in a very humbler manner. I'm no guru. I am simply wanting to use my experience. This is my 45th year of teaching, active teaching. I started my teaching in 1981, and this is the 45th year going. So you may understand that the generations I had the opportunity to teach in 1980s, then 1990s, then 2000 to 2010, then 2010 to 2020. Every decade I get a new generation. So when I started teaching in 1980s, the experience was altogether different. And when I teach today in IIT, the experience is different, and it's for all good reasons why it is different. But at some point of time, I remember 1990s and 2000, people used to listen from me how to manage stress because I'm a professional clinical neuroscientist, psychologist. So people used to come to me for advices how to manage their stress, how to perform effectively while getting rid of their stresses. So my only one advice at that point of time to everybody was that your workload will never create stress for you. How you carry the load is something very important in our stress. Today, I don't talk about stress management. Of course, my area has been neuroscience. I work on brain sciences. So I have some knowledge about these soft psychological areas as well. One such area has been happiness. But today I thought if I traditionally try to tell you what happiness is all about, it may be another boring day. I don't want you to be bored just by, trying to listen what are the facets, what are the principles, guidelines, philosophies. No, I'm not going to do anything of that sort. I'm just going to share my experience with all of you in last 45 years, 4 decades, 4.5 decades. Simply the way I see you and the way you see us and how you can better survive in this adverse and environment, which is not conducive for teaching and studying all the time. So let us start. I'll share my slide first because with the slides only you would be able to understand me. First, tell me once again whether the slides are visible or not. The slides are visible? Can someone tell me? Yes, sir. Okay.
So I tried to make my slides very self-explanatory because I know through online we may not be able to take care of all the nitty-gritties and nuances of the talks that is possible in an in-person conversation. So I have tried to understand all of you and also tried to let you know what you actually can do under the current circumstance in order to grow well. My interest is to see that you grow well. I'm not going to tell you how to repair your past. I'm only interested about how to build your future, how you can develop your insight and orientation and awareness about yourself and about the environment, rather than how to be comfortable, peaceful, and happy. That's not my goal. So we always say in Science of Happiness, it is not about how you can be happy. It is about how you can create happiness for others. So when you create happiness for others, the world around you become automatically happy. And the world around you, if it is happy, you don't have to chase it, because if you chase it, you will never get it. That's the idea with which we'll start, and let us see who you are actually. I'm referring only to the students, not about the uh, faculty, because faculties are dealing with the students on an everyday basis. So it's very important that how we, the faculties, with the teachers, see you. Now you see yourself. Have a look at your profile as we see. Anything that I show you, I have not taken from any source, either book or for internet. So you can always criticize me. You can always tell me, no, sir, this is not correct. I'm ready to accept it. But this is our viewpoint. Let us see the viewpoint first. Now, you all, the Zoomers particularly, have grew up with the technology. I mean, the technology has come to you automatically. In our time, probably technology was not there, not even a watch, an analog watch. So you grew up with technology and you can do too many things at one go because your capacity is very high. You have got very high capacity to process information and do so many things at one point of time, which in our generation, probably it was not possible. I can always connect you. I can always connect you. I just pick up my phone to a WhatsApp message and you will always respond to me. Always connectable and through online social interactions. It's possible in split second. You are confident and you are open to change as well. I mean, you know what you can do, but at the same time, you are very flexible. You can change your way of looking at things, and you don't resist it all the time. You are capable of reflecting collectively. The whole class can come together and discuss that this is the way we want our teacher to teach. And that's possible. It's called collective reflection. And if that you do, it would be advisable. It is very gratifying for us. But your problem is that you need instant gratification. Nothing is possible overnight. So remember, you reflect collectively, but you still look for personal instant gratification. You want a learning environment which is very personal. Your way of looking at things very unique. You don't learn like reading books. So I can share my example in IIT. One of my students, while I was teaching a theoretical portion in cognitive science, was telling, sir, why you have been talking up इतना क्यों बताते हो? Link दे दो, काम बन जाएगा. So, I mean, your learning environment is different. You learn better by touching, like mobile phone, moving, experiencing, rather than sitting back in the table and looking at the book. That's very unique style. But your problem is that you look for a lot of opportunities in life, but really don't know how to focus in one such opportunity. Because many of you believe that you are capable of getting many opportunities. Fine.
You can take many opportunities. Ultimately, you have to exploit one opportunity. If you get 10 jobs at a time, it will break your head. I would never like that you get 10 options to get a job. I would always like that you get at least two options, and that should be enough, not more than. Because then it will create a cognitive load in your head. This is what you call as FOMO, fear of missing opportunities, and we call it apprehension of hypothetical missed opportunity, as if हमने कुछ miss कर डाला. I mean, but you can't job 3, 4 jobs at one go. You have to do one job. So you have to focus on one rather than trying to do many things. I mean, exploit many such opportunities. And you often find mood swings. Even all of you love music. I know all of you love music. Even our time also we used to love music. But you always stay with music. You always float with the music. Yet you get mood swings. We never used to get mood swings. If our mood was bad, then we will listen to music, and then our mood becomes okay. But you are getting mood swings even after getting this musical swings. So these are your profile. And with this profile, and I can always tell you that you people are better than our generation, much better. You can process information much better. You are much more knowledgeable. But the question comes, why there are teachers then? This question has been asked in IITs as well, that while you learn, while you have more information about your subject matter, why do you bank on teachers? The job of a teacher is not to give you information. Job of a teacher is to create a template for information, not to give you information. It's like a content page in a book. You never read content page in a book. We, the teachers, only read the content page because we want our study materials to come from the top. So top-down learning system. So a teacher's job is not to give you information. Teacher's job is to give you input information. So every input must come in some kind of structure or formation. That input, when it comes in some kind of formation, it becomes information. And when you process information, then only it becomes knowledge. So this is the job of a teacher. So here you must understand what is that expected from your teacher. From your teacher, it is not expected that you get a collected piece of information. You can get it, you can Google it and get it. But remember, Google can share data. Google cannot share ideas. That you must remember. Google cannot share ideas. Google can only share data. So there is a fundamental difference between data and idea. Data, when Google gives, it becomes, you try to learn a data. Now, learning is different from understanding. If you learn, you can unlearn, you can forget. But if you understand, you will never forget, you will not de-understand. So remember, as a student, it's your job to understand first and learn later. Even if you have not learned, your brain will actually accommodate that. But if you have only learned, not understood, it may go out of your system as well. It remains as a temporary file in your brain. And temporary file actually doesn't work. Within a couple of days, maybe within some period, it will wash out. So teacher's job is to help you understand, not to help you learn. And there is a fundamental difference between learning and understanding. Understanding gives you idea. Learning gives you data, information. That is very important between a teacher's job and a student's job. Now let us see what are your challenges. You have got multiple challenges. How to manage conflict,
I mean, my slides are very self-explanatory. I don't have to explain with too many examples. But let me tell you, you always have got incompatible desires. मेरे को ये भी चाहिए, वो भी चाहिए. अगर आपके पास दो जॉब है, एक जॉब में सैलरी अधिक है और एक जॉब में आपकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट प्रोफेशनली बेटर है, आप कौन सा जॉब पसंद करोगे? दिस इज इनकम्पेटिबल डिजायर. आपको मनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है या ग्रोथ ज्यादा इंपॉर्टेंट है? इनकम्पेटिबल डिजायर्स एंड दे कोएग्जिस्ट विद यू. यू हैव गॉट सोशल प्रेशर. यू डोंट नो आपका जो स्टैंडर्ड है कौन उसको मेंटेन करता है. आपका स्टैंडर्ड हो सकता है पेरेंट्स के पास से आ रहा हो. आपका जो स्टैंडर्ड है हो सकता है इंस्टीट्यूशन से आ रहा हो. यू आर इन सुलिन यूनिवर्सिटी, so it may be coming from the university. It may come from your friends, that is peers. उनसे भी आ सकता है. और ये भी हो सकता है कि आपका स्टैंडर्ड आप खुद ही हो. तो you can have a self standard, you can have a friend's standard or a peer standard, you can have a institutional standard, or you can have a parental expectation and standard. आप किसकी स्टैंडर्ड फॉलो करते हो? तो ये आपके भीतर प्रेशर क्रिएट करता है. आपको लगता है कि कौन सी स्टैंडर्ड हम फॉलो करें. उसके बाद का आपका चैलेंज है फेलियर. कि फेलियर, एवरीबडी फेल्स इन सम काइंड ऑफ सिचुएशन, बट हमें लगता है कि फेलियर को हम लोग अच्छे से नहीं समझ पाए और इसके लिए हम ही लोग जिम्मेदार है, टीचर्स एंड पेरेंट्स. बिकॉज द मोमेंट यू फेल, पीपल बिलीव दैट you are substandard. Actually, failure gives you a proper standard. If you have not failed, you will not get your route. And if you have only learned how to fly, you will only get your wings. It is always better to get your route first, wings later, rather than to have wings first, route later. It's always better. So celebrate failure, but in a comfortable situation without social embarrassment. एक लड़का आईआईटी में मेरे पास आया कि सर मैं तो फेल हो गया. तो मैंने पूछा कि आपको कितना परसेंटेज मार्क्स? ही सेड कि 91%. आई सेड फेल कहाँ से हुए? तो ही सेड दैट सर आई एक्सपेक्टेड 98%. तो मेरे हिसाब से मैं फेल हो गया. तो फेलियर का जो डेफिनेशन है आप ही क्रिएट करते हो और आप ही इसको मैनेज करते हो. तो किसी और के स्टैंडर्ड पे फेलियर को आप मैनेज करने के लिए कोशिश मत किया. सो मैनेजमेंट ऑफ सेल्फ इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. लाइफ में स्ट्रेस है, कैरियर में भी स्ट्रेस. सो कैरियर इज वेरी इंपॉर्टेंट एज ऑफ नाउ फॉर यू, आई अंडरस्टैंड, बट ऑलवेज रिमेंबर एंड आई ऑलवेज टेल दैट कैरियर इज विद इन लाइफ, लाइफ इज नॉट विद इन कैरियर. लाइफ इज मच बिगर. तो लाइफ को समझने के लिए कोशिश करो, जस्ट नॉट अबाउट कैरियर. टाइम मैनेजमेंट भी आपके लिए एक प्रॉब्लम है. आप रात को जगते रहते हो. रिमेंबर, biologically I am a neuroscientist, so I know biologically at what time your melatonin secretion in the brain takes place, which is responsible for sleep. It takes place by 10 o'clock and it stops secreting the moment there is sunrise. So after 6:30, your melatonin would not be secreted. So you may sleep after that, up to 9 o'clock in the daytime, but you will never feel rejuvenated. भाई कोविड के समय हम सब लोग सोते ही थे, but did we ever feel rejuvenated at that point of time, 11 o'clock at morning time? So it's important that you manage your time like a manager, like a project manager. You manage your commitment as well. When you get too many responsibilities, don't get overwhelmed. Prioritize that which job is to be done first. You have got your interest, you have got your ability, you have got your expectations. Remember, you always want to go by your interest. Fine. If your interest is music, if your ability is in physics, and if your expectation is to be a civil servant,
You will never become so. So you need to understand how do they overlap. That overlapping is very important. Therefore, you manage your commitment and manage your sleep wakefulness cycle. Unless you do that, you will never feel rejuvenated because your decision making cannot be done without having good sleep. And also, take this. Many of us don't know how to take decision because decision making तो कहीं सिखाया नहीं जाता है ना कोई बुक है ना कोई सिलेबस है ना कोई गाइडेंस है पेरेंट्स के पास जाओ हमेशा कहते हैं बेस्ट डिसीजन ले लो टीचर्स के पास भी जाओ कहते हैं ये डिसीजन जो है हमेशा सबसे बेस्ट होनी चाहिए बट बेस्ट डिसीजन हम रोज नहीं ले सकते हैं कभी कभी डिसीजन लेना पड़ता है जिसे हम कहते हैं राइट डिसीजन नॉट ए बेस्ट डिसीजन तो इट कैन बी अ गुड डिसीजन इट कैन बी अ राइट डिसीजन इट कैन बी अ बेस्ट डिसीजन डिपेंड करता है कि कौन से डिसीजन किस कॉन्टेक्स्ट में लेनी चाहिए आप हमेशा बेस्ट डिसीजन लाइफ में लेना चाहोगे पर बेस्ट डिसीजन हम लोग मैरिज में एक ही बार लेते हैं तो रोज रोज बदल थोड़े सकते हैं एक ही बार तो लेते हैं तो बेस्ट डिसीजन जो है हमेशा बेस्ट रहेगा इसका भी कोई गारंटी नहीं है तो डिसीजन मेकिंग एक प्रोसेस है इसको आउटकम मत समझो इसको टारगेट मत समझो इट्स अ प्रोसेस इट्स अ जर्नी सो व्हाई यू आर कंफ्यूज्ड बिकॉज हमारा कंफ्यूजन का मेन कारण है कि लाइफ में कौन सी चीज को पहले लानी चाहिए कैरियर को या लाइफ को वी डोंट नो as of now you are leading to career only you don't think about life at all but let me tell you life is much bigger you have to think about it as well your career growth and life goal must be compatible career mein to you believe that you must get the best financial package which is available with you but your life goal is to find happiness peace if that is the life goal money may not always satisfy you money can money can give you some kind of happiness but money cannot give you life satisfaction is something which is long term happiness so it doesn't depend on anything but your 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 happiness can come at times with money as well so there is a famous theory money cannot buy happiness by Daniel Kahneman he got Nobel Prize on this work and it's a famous work कभी मौका लगे तो आप लोग पढ़ लेना इसको your social sharing is very shallow because you don't maintain eye contact जब तक आप शेयर नहीं करोगे अपना प्रॉब्लम ना तो यू विल सफर इन साइलेंस कितनों भी आपको कुछ मिल जाए देखो आप अगर क्लास में फर्स्ट आते हो सब लोग आपको जो है अलग कर लेंगे सब लोग आपको अलग करा देंगे क्योंकि आप फर्स्ट आपके इर्द गिर्द लोग नहीं आएंगे पर आप अगर बैक बेंचर हो तो भी लोग सोचेंगे भाई ये तो बैक बेंचर है तो शेयरिंग डजंट डिपेंड ऑन योर रैंक और डजंट डिपेंड ऑन योर स्मार्टनेस और योर फिजिक्स शेयरिंग इज समथिंग which is important on a daily basis never suffer in silence if you have problem find someone with whom you can share and if you have to grow remember you cannot grow alone you have to grow with others if you have to grow alone then you will never win the game in a football match if you only want to become Messi or Ronaldo you will get goals but ultimately your team may lose a final series that's why it is very important that don't rely on your personal capacity only for growth. It is the network, it is the team which helps you grow. That's why we say that some individuals put together cannot make a team. Team makes an individual. That's important. So you have to avoid such situations. Develop a positive mindset. How? If you are anxious, you are not alone. Remember, if you look too much about your past, you would be depressed.
If you look too much about your future, you would be anxious. But remember, you are not alone. Everybody in this world is suffering. So, if you believe that you are the only person who is suffering, that's not correct. Look for support system. If you are not managing yourself, don't suffer in silence. Don't get overwhelmed. Share with your teachers, your friends, your parents. The more you share, better it is. But किसके साथ share करोगे? The person who will actively listen to you, not passive listening. Passive listening means someone tells, अच्छा अच्छा बोलते चलो क्या problem है तुम्हारा? It's a passive listening. Active listening is someone who may not talk to you, but who is actually sharing their empathy with you. So look for support system and be optimistic. A bad time cannot be a bad life. Somebody who is optimistic, even if he fails, he will say or she will say, it's a bad day, not a bad year, not a bad life. It's a bad moment only. So be optimistic. You may have a bad time, but not a bad life. Therefore, you have to be resilient. A resilient person is someone who can bounce back easily, who believes that it's an ordinary magic. Anybody can get it. There is no gene for that. There is no blood group for that. There is no special brain for that. So Nelson Mandela often used to say, falling is no failure. Not getting up surely is a failure. You fall down, fine, but get up. If you can get up, you are actually not failing. So if there is a new normal that has come up in this generation, consciously reduce your stress. This is the order of the day. And if you look at the newspaper, every day there is a problem. Every day there is a stress. Every day there is bloodshed. And why the media always comes with the negative news? Because that attracts our attention. That attracts our attention. And it actually accumulates within you. And after accumulating over a period of time, you believe that kya ho gaya mere ko? Is it possible that everybody is a bad in this world? No. You take it from me. I have lived my life. I'm 70 years old. Only 5% people in this world are bad. 95% people are good. So find happiness in the classroom. How? If you believe that success, you may be very good in chemistry or psychology or in math. Fine, absolutely fine, but only math will not take you forward. It's a myth that I'm good at. Go out of box. It's a myth that intelligent people can do everything. Actually, intelligent people can do very little thing. Very little thing. Only average people can do everything. So the success is that you can do everything, just not math. You spot other strength. You may be thinking, what is your strength? Don't try to find your strength all the time. You see the other's strength. Watch other strength. You can invite that. If in your class there are 50 people, 50 people must be having their own unique strength. Watch it out. See who is good at what. And then try to imbibe it in the class. Remember, sharing is caring. Learn from your peers. You cannot learn only from your teachers. You have to learn from your peers. So teacher's job is to deliver talks, but that's only 25% of your learning. 75% will come from your friends. Share your experience. If you believe that you are good at one thing, you share your experience with others so that others can also get the benefit of you. If others don't get benefit of yours, then you will never feel that yes, you have done something wrong. So if you are getting an award
Others must be able to clap behind you. But if you get an award but nobody is clapping for you, it's no award. So share your experience with everybody. Voice and choice is something. In a class, you will find someone is always doing something which is very right. Promote those right things. If there is a कोई बेकार लिफाफा पड़ा हुआ है, कोई चिप्स का कोई पैकेज पड़ा हुआ है, आप अगर उठा के डस्टबिन में डाल दिए तो लोग आपको देखते हैं कि भाई इनके भीतर ये क्वालिटी है, who knows how to keep our environment clean. Only Clean India mission will not make us clean. We have to be clean in our attitude, not just by our mindset. Communicate. Gesture. Don't just communicate with your words. Words पे हम बहुत ध्यान नहीं देते हैं. आप क्या बोलते हो इस पे हम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं. Because God has given us words only to hide our thoughts. हम बोलते कुछ और है, सोचते कुछ और है. इसलिए your gesture tells you all. आप gesture को कैमोफ्लेज नहीं कर सकते, इसको डिसीव नहीं कर सकते. आपका जेस्चर हम ज्यादा रीड करते हैं. एक टीचर का जो जेस्चर है वो हम ज्यादा रीड करते हैं as compared to what is written there in the board or in the slides. Walk the talk. I mean, कभी कभी क्लासरूम के बाहर चलो और जो डिस्कशन करना है किसी पेड़ के नीचे बैठ के करो. You will remember better. कभी कभी स्लो डाउन कर जाओ. सब कुछ नहीं पढ़ना है, सब कुछ एक ही समय में नहीं करना है. You nudge yourself. Your inner voice को सामने आने के लिए समय दे दो आराम से, तभी जाके ये परमानेंट कंसोलिडेशन हो पाएगा. जो चीज आप पढ़ते हो हाफ एन आवर में, उसको कंसोलिडेट होने में 30 आवर्स लगते हैं. 30 मिनट में जो चीज आप पढ़ते हो उसको कंसोलिडेट होने में 30 आवर्स लगते हैं. पर अगर 30 मिनट जो आप पढ़ते हो उसमें नोटिस अधिक करते हो तो और जल्दी आप अंडरस्टैंड कर जाओगे. इसलिए मैं बता रहा था, अंडरस्टैंडिंग एंड लर्निंग आर मच मोर डिफरेंट थिंग्स. You understand when you notice, and you learn when you just listen. There is a difference between learning and understanding. Humor is equally important. Only intelligent people can do humor. Environment को लाइट रखा करो. हमेशा सीरियस टॉक करने की जरूरत नहीं है. नेगेटिव एक्सचेंजेस की जरूरत नहीं है. बहुत जरूरत पड़े तभी आप नेगेटिव बातें करो, नहीं तो पॉजिटिव बातचीत क्या करो. ब्रेन को रिवायर करना जरूरी है. माइंड और माइंडसेट तो अलग चीज. एवरीबडी हैज गॉट ए गुड माइंड, बट एवरी पर्सन डजंट हैव ए गुड माइंडसेट. माइंडसेट को बनाने के लिए, पॉजिटिव माइंडसेट को, ग्रोथ माइंडसेट को बनाने के लिए आपको एटीट्यूड की जरूरत है, एप्टीट्यूड की जरूरत नहीं है. माइंड के माने हम लोग एप्टीट्यूड समझते हैं कि आप कितना बुद्धिमान हो. इंटेलिजेंस आपको लाइफ को जीने नहीं देगा, कैरियर ओनली बनाएगा. तो माइंडसेट इज इक्वली वेरी इंपॉर्टेंट. फेलियर अगर है, जैसे कि मैंने कहा, उसे भी सेलिब्रेट किया करो. सेलिब्रेट मिस्टेक्स. आपने अगर मिस्टेक किया है, नो प्रॉब्लम. एरर तो हमेशा रिवर्सेबल होता है. पर इफ यू आर बायस्ड, देन द एरर इज इरिवर्सिबल. But if you are making mistakes, that's an error which is reversible. तो error and bias में भी बहुत ज्यादा अंतर है. Bias is never have a biased viewpoint. Then it will be irreversible mistake. But if you are only making mistake without having any intent behind it, you can always come back. And you experience flow. Flow माने क्या है? Your action and thought must melt down together. जब आप फ्लो में होते हो ना, तब आपको पता भी नहीं चलता है समय का कि आप कोई किसी चीज में, क्रिएटिविटी में आप जब लगते हो तो आपको पता भी नहीं चलता
कि आप कुछ कर भी रहे हो, अपने को ड्रैग नहीं करते हो, आपको लगता है आपने एंजॉय किया समय, जबकि आपने कुछ सीखा जरूर। पर इस फ्लो और हाइपर फोकस में एक अंतर है। देखो, एक हाइपर फोकस है, ये हाइपर फोकस है, ये फ्लो नहीं है। हाइपर फोकस हम नहीं चाहते हैं। मोबाइल पे हम लोग हाइपर फोकस्ड हो जाते हैं, इसे फ्लो नहीं कहते हैं। पर ऊपर का जो फोटोग्राफ है, ये देखो, इसे फ्लो कहते हैं। माने आपका कॉन्शियसनेस और आपका जो एक्शन है, दोनों मेल्ट कर जाता है, पता भी नहीं चलता है समय कहाँ बीत गया। तो क्वाइट टाइम ले लो अपने लिए। कभी कभी अपने को दूर रखो सबसे, और सोच लिया करो कि मैं कर क्या रहा हूं इस समय, मैंने क्या किया, मैं क्या कर रहा हूं इस समय, और मेरे को आगे क्या करना। इसकी एक आइडिया स्ट्रीमलाइन आप क्वाइट टाइम पे ही कर लोगे, तभी जाके ये एक्सपीरियंस और फ्लो आपके पास होता रहेगा। पर ये हाइपर फोकस नहीं है। अब हम क्विकली बताएंगे आपको आप और क्या कर सकते हो। पॉजिटिव थॉट्स को लाओ, नहीं तो नेगेटिव थॉट, रिमेंबर, एज ए साइकोलॉजिस्ट आई नो, any thought that enters in your mind will find an expression in your body. जैसे आपका कोई नेगेटिव थॉट मेरे लिए है, वो नेगेटिव थॉट विल डेफिनेटली कहीं ना कहीं, किसी भी लेवल पे, किसी भी इंटेंसिटी में आपका हार्ट या लिवर या लंग या किडनी या ब्रेन को प्रभावित करेगा नेगेटिव वे। तो एनी थॉट दैट यू एंटर, नेगेटिव थॉट, इट विल फाइंड एन एक्सप्रेशन इन योर बॉडी। तो इसलिए आप नेगेटिव थॉट से दूर रहा करो। दोज हु आर ओनली नेगेटिवली ओरिएंटेड, they find more psychosomatic disease like cardiovascular problem, like respiratory problem, gastrointestinal problem. These are all called psychosomatic problem, because those who are having a belief that the world is bad, ये दुनिया जो है ठीक नहीं है, सिक्योर नहीं है, यहाँ कुछ ठीक नहीं है, सब खराब है, you are actually killing your own organ. So allow your positive thought, else your body will be at the burden. Words matter. अगर आपको कोई चीज बतानी है, never try to decorate it with lot of adjectives. Words matter. Talk about your problem in simple language. Live in the present. Don't try to. Our Dr. Chetri Sandhu Bhai always talks about it. Mindfulness is all about practicing how to live in the present. It's very difficult to live in the present. You can always go back to your past, or you can always try to fly to your distant future. As I said, if you are always in the past, you will be depressed because there are a lot of negative thoughts. And if you are always in the future, you would be anxious because you will always anticipate some kind of failure. So it's better to be present. Don't overwhelm yourself in discussing about the future. कि आगे क्या होगा, आगे क्या होगा किसी को नहीं पता है, और मेरे को पता नहीं है। 45 साल टीचिंग के बाद हमको पता नहीं है कि कल हम क्या पढ़ा पाएंगे और सच्ची में पढ़ा पाएंगे कि नहीं। So our gestures matter. Comforting gestures give us strength. Try to comfort yourself. कोई स्ट्रेस मैनेजमेंट की जरूरत नहीं। मेडिटेशन आप करना चाहो करो, योगा चाहो तो करो। मैं तो ये कहता हूं कि अगर ये सब करो तो आपका स्ट्रेंथ और फोर्टिफाई कर जाएगा और बेहतर हो जाएगा, ना भी कर पाओ आप। एवरी मूवमेंट इज ए योगा। यू आर सेलिब्रेटिंग योगा डे। आप कैसे बैठते हो, आप कैसे सोते हो, आप कैसे चलते हो, एवरी मूवमेंट इज ए योगा। एवरी मूवमेंट माइंडफुल होके अगर आप पैदल चलते हो तो भी वो योगा का ही एक्सप्रेशन होएगा। तो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, योर जेस्चर्स मैटर। सो टेक डिसीजंस। क्विकली हम आपको अब बताना चाहेंगे कि अगर आप न्यू एनवायरनमेंट में आए हो, यू में परसीव इट हॉस्टाइल। कोई भी, जैसे स्टूडेंट्स, न्यू स्टूडेंट्स किसी भी न्यू इंस्टीट्यूशन में आता हो,
तो उनको लगता है यहाँ सब कुछ हॉस्टाइल है। ये स्वाभाविक है, 99% को लगता है। घर नहीं है, घर से बाहर हो आप, और एवरीबडी हैज गॉट द सेम प्रॉब्लम। जब एवरीबडी हैज द सेम प्रॉब्लम इन द सेम हाउस, then why to think about it too much? Adapt to the environment. Daily hassles is a equal important thing. आपको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रोज होता रहेगा। कभी आपके पास दाल चावल नहीं है, कभी आपके पास मेडिसिन नहीं है, कभी आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हो पाया, कभी आप क्लास नहीं कर पाए। दीज आर स्मॉल थिंग्स इन लाइफ, बट इफ यू अलाउ देम टू क्यूमुलेट ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, कि मैं ये नहीं कर पाया, मैं वो नहीं कर पाया, मैं ये नहीं हो सका मेरे से, then you will actually not be able to survive effectively. Find a match between your ability and interest. देखो, हेड एंड हार्ट दोनों एक साथ नहीं आएगा। योर इंटरेस्ट हमेशा हार्ट में रहेगा, योर इंटरेस्ट, योर एबिलिटी जो है हमेशा हेड में है। इसलिए एप्टीट्यूड एंड एटीट्यूड दोनों हाथ नहीं मिलाता है। अगर दोनों को लेके चलना है, अगर आप फिजिक्स में अच्छे हो, अगर आप किसी फिलोसफी में अच्छे हो, तो ठीक है, यू डू फिलोसफी एज योर हेड, और म्यूजिक आपका अगर हार्ट है, उसे पेयर्ड करियर बना लो, सेकंड करियर बना लो। तो लर्न हाउ टू डेवलप ए पेयर्ड करियर, सेकंड करियर। बिकॉज सेकंड करियर से क्या होगा, सेकंड करियर से आपका फर्स्ट करियर और ज्यादा स्ट्रेंथेंड हो जाएगा, फोर्टिफाई कर जाएगा। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आपका काम खाली पढ़ना नहीं है, खेलना भी आपका काम है। म्यूजिक बजाना या प्ले करना या सुनना भी आपका काम है, वो भी आपका करिकुलम में आता है। तो दोनों को जोड़ना सीखो। ये मत सोचो कि हम अगर खेलने जाएं तो हमारा पढ़ाई पे नुकसान होगा। हमसे समझ लो, सुन लो, कि अगर खेलने आप जाते हो, यू विल डू बेटर इन योर स्टडीज। अगर आप खाली घर पे बैठ के पढ़ते हो टेबल पे, यू विल नॉट बी एबल टू डू एनीथिंग। एंड देयरफॉर एक बैलेंस लाओ फ्लेक्सिबिलिटी एंड डिसिप्लिन में। डिसिप्लिन किसी को नहीं अच्छा लगता है, किसी को नहीं अच्छा लगता है, पर आप समझ लो कि अगर आप डिसिप्लिन नहीं हो, डिसिप्लिन, तो आपके लाइफ में क्या होएगा। आप हैबिट नहीं डेवलप कर सकते हो। जैसे मान लो कभी आपने आपको मन किया कि मंजन कर लूं, टूथब्रश कर लूं सुबह उठ के, कभी मन नहीं करता है। ऐसा आप करते हो? ऐसा आप कभी नहीं करते हो। आपने हैबिट डेवलप कर लिया है, सुबह उठ के मंजन करनी है, टूथब्रश लेके टूथब्रशिंग करनी है। आपका ये एक हैबिट बन गया है, आपको सोचना नहीं पड़ता है और सुबह उठ के आज फिर हमको मंजन भी करना। आपको ड्रैग नहीं करना पड़ता, ये आपके डिसिप्लिन में आता है। तो इतना छोटा सा एक चीज अगर आपके डिसिप्लिन में हो, तो और भी काम जो कि बिना सोचे किया जा सकता है, उसे भी डिसिप्लिन के दायरे में ला दो, ताकि आपका फ्लेक्सिबिलिटी का जो टाइम है वो बेहतर हो सके आपके लिए। नर्चर योर ब्यूटीफुल माइंड, बट रिमेंबर, माइंड रहने से कुछ नहीं होता है। इंटेलिजेंट पीपल आर लेस हैप्पी। Mindset is equally important. Learn how to develop a mindset. It's very important. Like, you cannot have a negative mindset. अगर आपके पास नेगेटिव माइंडसेट है और आप बहुत इंटेलिजेंट हो, आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का सर्वनाश कर दो, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को आप डिस्ट्रॉय कर दो। इससे अच्छा है कि भाई आपका माइंड बहुत इंटेलिजेंट नहीं है, माइंडसेट भी बहुत अच्छा नहीं है, चल जाएगा। पर ऐसा कोई कॉम्बिनेशन बने कि आप बहुत इंटेलिजेंट हो और आपका माइंडसेट बहुत नेगेटिव है, नुकसान हो जाएगा सबको, खाली आपको नहीं, सबको नुकसान हो जाएगा। डेवलप स्ट्रेटेजी टू थिंक रैशनली। देखो, दिन भर में 95% आपका जो थॉट्स है ना, वो रिपीट्स है। रिपीट, एक ही चीज को आप 50 बार सोचते हो, 90 बार सोचते हो। रिमेंबर, विथ एवरी थॉट your brain is actually using energy, glucose, every thought। और एक ही थॉट अगर 50 बार आप सोचते हो, तो 50 दफे आपका ब्रेन का जो एनर्जी वो यूज होएगा, और नुकसान होता है इससे।
तो इनोवेशन के लिए, क्रिएटिविटी के लिए कहाँ एनर्जी बचेगा आपके पास, अगर 95% आपका थॉट रिपीट अगर होता हो तो. देन ट्राई टू अंडरस्टैंड योर सेल्फ. इट्स इंपॉर्टेंट. Always don't try to be very reflexive. Try to be reflective as well. Reflexive माने आपको कोई एक्शन लेना है, आप तुरंत ले लेते हो एक्शन. बट सेल्फ को अंडरस्टैंड करने के लिए सोचना पड़ता है, रिफ्लेक्टिव बनना पड़ता है. दूसरों को भी देखो, खाली अपने को नहीं. बिटवीननेस इज इक्वली इंपॉर्टेंट. खाली विदिननेस नहीं. आपके बगल में अगर कोई खुश है तो आप भी खुश हो जाओगे. सुबह उठ के कोई अगर मुस्कुराता है, नमस्कार या गुड मॉर्निंग कहता है, आप भी मुस्कुराते हो, और उसके बाद कम से कम 10 सेकंड आपका मूड ठीक हो जाता है. तो बिटवीननेस इज इक्वली इंपॉर्टेंट. विदिननेस इज इंपॉर्टेंट, बट बिटवीननेस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट. मैनेज योर अनसर्टेनिटी. लाइफ कैनॉट बी सर्टेन. कुछ लोग कहते हैं बार बार, सब ठीक है ना. अरे कुछ नहीं ठीक है. लर्न हाउ टू टेक डिसीजंस. Don't bank on what decision to be taken. Learn only the process. कोई भी सिचुएशन हो आपके सामने, ambiguous या uncertain situation हो, you would be able to handle it because you know how to take decision. Many people are very intelligent, but they don't know how to take decision. So go beyond short-term vision. Long-term vision in life is equally important. And redefine success. As I said, failure is not orthogonal to success. Failure is not opposite to success. सक्सेस और फेलियर में बड़ा रिलेशनशिप है, ओवरलैपिंग है. आप अगर फेल नहीं किए कभी, आप सक्सीड कर ही नहीं सकते. कोई अगर बंदा बोले कि हम जिंदगी में कभी फेल नहीं हुए, तो या तो भगवान है नहीं तो पागल है. दोनों में से कोई एक होएगा. तो फेलियर गिव्स यू रूट, success gives you wings. It's always better to have roots as compared to your wings. And build your career. No problem. Your students, build your career, but don't leave your life behind. You see, when you stand on the top of a hill or hillock, you look at the universe. Life is like a universe, and you are actually standing on a piece of stone. So building career is your ability to stand on a piece of stone, the photograph that you see. But looking at the life is much bigger. Look at the universe, you will understand what life is all about. So career is within life. Life is not within career. Your universe is not at your feet. You are within the part of the universe. Well, I'm nearly done. I'm quickly going to tell you why, therefore, we are unhappy in our life, because we always go by comparison. We always go by comparative standard rather than self-standard. If you compare with others, you will only get discontent. Compare with yourself. It will help you improve. Have gratitude. सुबह उठ के आप अगर खाली ये सोचते हो कि कल हमको क्या नहीं मिल पाया, तो आपका दिन ठीक नहीं जा सकता है. हम लोग खाली इतना ही कहते हैं, किसी और का चेहरा देख के उठे तो इसलिए हमारा दिन खराब है. ये कुछ नहीं है, गलतफहमी है. ये लैक ऑफ ग्रैटिट्यूड है. कल भी आपको कुछ मिला है और उस चीज के बारे में हमने ग्रैटिट्यूड शो नहीं की. हम हमारे आईआईटी स्टूडेंट्स को बताते हैं, आप जो आईआईटी जेई क्लियर करके आए हो, did you ever give thanks to the servant, maid servant, your parents, your friends who could not get it? Everybody must have contributed to your getting into the IIT system. Did you show their gratitude, show your gratitude towards them? You only think about after getting into IIT, will I get a good package or not? Will I get a good job or not? So you are actually having lack of gratitude. Gratitude is a very important thing. I can quickly share one of my story in the classroom. एक बच्चा रोज क्लास में आके हमसे कहता था, सर हमारे यहाँ आईआईटी में तो सब कुछ ठीक है, हॉस्टल का खाना बहुत बेकार. तो मैंने उससे कहा कि बेटा आज
कैंटीन में जाकर खाना खाने के बाद, खाना जैसे भी हो, कुक को जाके बता दो कि दादा आज का खाना बहुत बढ़िया था, और वो जाके बता दिया कुक को। और अगले दिन से कुक रोज आके उससे खाना परोसने के बाद पूछता था कि बेटा आज का खाना ठीक था, तुम्हें और कुछ चाहिए होगा। 10 दिन बाद मैंने जब उससे पूछा कि बेटा आजकल खाना कैसा चल रहा है, बोले सर आजकल का पता नहीं, खाना तो बहुत बढ़िया चल रहा है, पहले तो बहुत खराब चल रहा था। मैं बताऊं, खाना वही है, आपका ग्रैटिट्यूड जो है आपको बदल डाला। तो हैव लिटिल ग्रैटिट्यूड, a little gratitude will actually change you. Don't remain in your comfort zone. You always think that, well, मेरे को अगर फिजिक्स में, आई एम वेरी गुड एट फिजिक्स, और मैं अगर फिजिक्स लेके ही आगे बढ़ूं तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि फिजिक्स में ही मेरा इंटरेस्ट है। गलत फहमी है। फिजिक्स आपका कंफर्ट जोन है, आप और कुछ सीखना नहीं चाहते हो। जिस सब्जेक्ट में आप सबसे खराब करते हो, कोशिश करो उस सब्जेक्ट को लेके आगे बढ़े, क्योंकि आप कंफर्ट जोन तो ब्यूटीफुल है, पर उसमें कुछ उगता नहीं है। नथिंग ग्रोस देयर इन कंफर्ट जोन। सो डोंट बैंक ऑन योर एबिलिटी टू गेट गुड मार्क्स इन a subject. You actually think about how you can actually develop interest in a subject where you have not gotten good marks. And of course, we always live in the past or in future. As I said, 90% of our thoughts are repeats. 95%। एक दिन में हम लोग करीब 60,000 थॉट्स आते रहते हैं। आप पूछोगे आपको कैसे पता? पता हम लोग एक इंस्ट्रूमेंट के जरिए करते हैं जिसे कहते हैं फंक्शनल मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। मेरे लैब में वो इंस्ट्रूमेंट था, ये करीब 20 करोड़ का एक इंस्ट्रूमेंट है, जिसमें जब आप मैग्नेट के भीतर जाते हो, एमआरआई आप सब लोग जानते हो, जब आप मैग्नेट के भीतर जाते हो तो हमें दिखता है साफ साफ कि कौन सा नेटवर्क आपका एक्टिवेट हो रहा है इस समय। ये मैग्नेटिक इन्फ्लुएंस से पता चलता है हमको कौन सा नेटवर्क आपका एक्टिवेट हो रहा है। आप अगर मैथ्स करते हो, मैं आराम से बता सकता हूँ कि मैथ्स के लिए ब्रेन का कौन सा जोन इंपॉर्टेंट है, तो एक्टिवेट होता है। आपका एक ही जोन यदि बार बार एक्टिवेट होता है तो आप जान लो कि आपका थॉट्स बार बार रिपीट हो रहा है, और रिपीट थॉट से आपका ब्रेन का ग्लूकोज या एनर्जी खत्म हो जाती है। बट उसका जो बाकी 5% रहता है, उससे आप इनोवेट नहीं कर सकते। तो जो चीज आपने रिपीट, ये चीज आपको लगता है कि हमें रिपीट थॉट्स में आ रहा है, उसे लिख डालो, पॉकेट में रख लो, दैट्स ऑल। इतना याद रखो कि पॉकेट में कुछ है, दैट्स ऑल। यू वुड कंटिन्यू टू बिकम इनोवेटिव। फाइनली देखो, इफ यू वांट टू बी हैप्पी, happiness doesn't come from material gain. Happiness comes from your contribution to the society. किसी को, किसी के लिए कर दो, अब बिना बताए करो, और किसी को मत बताओ कि तुमने ये काम किया। हम इसे कहते हैं पावर ऑफ एनोनिमस वर्क। आप कोई एनोनिमस काम ऐसा करो यूनिवर्सिटी में, किसी को पता भी ना चले, पर आपको पता है कि हमने ये किया, और बताने के लिए कोशिश तक मत क्या करो। देखो, दुनिया में जितने बड़े बड़े लीडर्स है ना, वो सभी बड़े हुए हैं इसलिए क्योंकि दे हैव ऑल डन पावरफुल वर्क विच इज नॉट नोन टू एनीबॉडी। लाल बहादुर शास्त्री हमारे प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे, वो हमेशा कहते थे कि इफ यू हैव टू लीड, यू डू नॉट हैव टू बी लाउड, डोंट बी लाउड इन ऑर्डर टू लीड। सो द पावर ऑफ डूइंग समथिंग एनोनिमस, जो किसी को ना पता चले, वो ही आपको हैप्पीनेस दिलाता है, और कुछ नहीं। जस्ट नॉट ए मोमेंटरी थिंग, यू कैन एक्चुअली लास्ट। ऐसा भी नहीं है दुनिया, दिस वर्ल्ड इज मेंट फॉर ओनली सम पीपल हु शुड बी हैप्पी। हम एक छोटा सा किस्सा सुना के आपको खत्म करेंगे। एक हमारा जब मैं डीआरडीओ में डायरेक्टर जनरल था, नेचुरली मिलिट्री हमारे इर्द गिर्द घूमता था। लाल बत्ती वाला कार देख के एक रिक्शा वाला रोज मेरे को सैल्यूट मारता है। तो एक छुट्टी के दिन हम टहल रहे थे, और देखा कि वो रिक्शा वाला जो है मेरे पास साथ साथ घूम रहा है। मैंने उससे पूछा कि क्यों बेटा आज रिक्शा नहीं चला रहे हो?
हमसे बोले बाबूजी आज हम 600 रुपया कमा लिए, दिल्ली की बात, 600 रुपया कमा लिए। हमने कहा तो क्या हुआ, अभी तो दिन है, थोड़ा और चला लो, कल के लिए सहूलियत हो जाए। तो उसका जवाब सुन के मैं हैरान हो गया। वो बोले कि बाबूजी ये तो आप सोचते हो, मैं नहीं सोचता। मैं 600 रुपया कमा लिया, मैं बीवी बच्चों के साथ रोटी खाऊंगा रात को जाकर, हमें नहीं चाहिए 700 रुपया। और उस दिन हमको पता लगा कि मैं, हाउ स्मॉल आई एम, हाउ अनहैप्पी आई एम ए पर्सन इन फेस ऑफ ए पर्सन हु इज सो स्मॉल। तो ऐसा भी नहीं है हैप्पीनेस खाली मेरे लिए है जिसको बढ़िया नौकरी है। हैप्पीनेस सबके लिए है। एवरीबडी कैन एक्वायर इट, एनीबडी कैन डिजर्व इट। सो हैप्पी एंड अनहैप्पी पीपल में कोई डिफरेंस नहीं है, ना तो ब्रेन में है ना जीन में है। आप इंफॉर्मेशन को प्रोसेस कैसे करते हो। तो हम पाते हैं कि दुनिया में दो ही तरह के लोग हैं। एक पता है कि ये दुनिया बहुत अच्छा है, सिक्योर है, और एक एक को लगता है ये दुनिया बहुत ही बेकार है, इनसिक्योर है। दो ही तरह का लोग है। ज्यादातर लोग ये सोचते हैं कि भाई दिस वर्ल्ड इज नॉट गुड, वेरी इनसिक्योर, यू कैन बी चीटेड एनी टाइम, पीपल आर ऑल बैड इन अराउंड यू। और एक तरह के लोग हैं, नहीं नहीं, एवरीबडी इज गुड, ओनली सम पीपल आर बैड। तो दोनों में कोई अंतर नहीं है बायोलॉजिकली और जेनेटिकली। अंतर खाली इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग की है, कि दो लोग दो तरह से इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करते हैं। और ये जो इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग है वो एक चॉइस है, कोई कंपल्शन नहीं है। यू कांट बी कंपेल्ड इन हैप्पी, यू कांट बी कंपेल्ड टू बिकम हैप्पी, यू कांट चेज इट, you have to only create it. And if you have to create it for others, it remains a choice for you. Finally, just don't bank on your books, go beyond your basics, try to become a part of the big picture. You are just not in the classrooms. You are part of the institute. You are part of the nation. You are part of the universe. Get a bigger picture. Just not try to confine yourself to a particular path. और देखो, इनोवेशन अगर कुछ करनी है तो कॉफी पीते समय, चाय पीते समय यू विल बी एबल टू इनोवेट। टेबल पे बैठ के या हॉस्टल रूम पे या बिस्तर पे बैठ के अगर आप चाहो तो इनोवेट कर लो, नहीं कर पाओगे। इनोवेशन वैसे नहीं हो पाता है। इनोवेशन हमेशा लीजर आवर में होता है, कंफर्टेबल आवर में, जब आपको कुछ और नहीं करना होता है, उसी समय आपका इनोवेटिव आइडियाज और थॉट्स आते रहते हैं। हम मजाक करते हैं, कभी कभी इनोवेटिव आइडियाज आपका या तो ड्रीम में आता होगा, नहीं तो बाथरूम में। ये दोनों जगह जो है आप इनोवेट कर लेते हो। सो डेवलप रेजिलियंस प्रोएक्टिवली एंड broaden your thought process. Have flexible goal in life. Get good inclusive social group. Think, look at the universe. Have a wider visual search, and that will help you grow in a much bigger manner. So finally, keep delivering. We need your light. Thank you.